Assalamu alaikum, and today it's lecture number 3. Course code is 563, and you know me very well. I'm Dr. Anil Salman, and the course is Operations Strategy. Moving on with a normal routine, which I always ask. Hope you have done the things that I have asked you in lecture number 2. Or itni zyada cheezein nahi thi. It was basically that you have to read something in the newspaper, in the magazines, and you should at least start reading the 3 big magazines where you can get the news about operations, the news about businesses, and that helps you where we would say कि जी theory और practice कहाँ पे converge कर रही है and कहाँ पे ये diverge कर रही है. Now, moving on to the first thing, that's basically just giving you the recap of the last lecture. It was that chalo, let me just start with the first lecture. I asked you that I'll be talking about operations first, then I'll be talking about strategy, और फिर हम इन दोनों को mix करते हैं. Let's start with lecture number 4, which would be the next one, where we will talk about कि जी operation strategy क्या होता है. Now over here, when I'm talking about strategy, last lecture, I literally enjoyed talking to you at that point of time, because strategy is a kind of वो जो होता है ना कि it's a aura, or it's something that every business manager would love to do, and every business manager makes it. And I always tell my students that after 5 years, once you get the first jobs, the most diverging factor between you people is your salary factor. Some people are still going to be at 50,000, some must be at 5 lakhs, some must be in the mid of that, or ये जो salary differentials होते हैं ये आपके होंगे because of your decision making, or decision making में mostly what kind of strategies you are formulating for the promotion of business. Now, the point is कि strategy है क्या? It's basically a roadmap. It's basically that what the company is at present, what it wants to be in future, और इस जो passage को है हम किस तरह cover करते हैं. Overall, strategy का जो concept था that came in 50s, operation strategy का आया, लेकिन strategy has been always there. जो कि I was telling you जब मैंने I was giving you example of the kings and the warriors कि जी they played chess, और वहाँ से आपकी strategy बनना शुरू होती थी. और इसी वजह से we have seen जहाँ पे word strategy होता है books के ऊपर बड़ा वो chess का एक बड़ा निशान बनाया होता है. So it's something that requires a skill of your forecasting, something that requires a skill of your how you analyze the present situation and what you are thinking, that how you will reach in the present point of time. Then, before we talk about the procedure of strategy formulation, we talked the first step is you're developing your mission. So mission statement आप बनाते हैं. Mission is basically that why you are in this particular business. It's basically the long term vision होता है. मैंने Walt Disney की example दी थी, Nokia की example दी थी, Microsoft की, Apple की, किन सारों के missions हैं, that why are they in this business. उसके बाद then we talk about objectives. Objectives are basically the endpoints towards which any activity is directed, and objectives को जब formulate करते objectives 2 किस्म के होते हैं. One is your financial objective, another one is your strategic objectives. Financial objectives के अंदर you are more talking about revenues, you are more talking about profits, you are talking about कि जी हम कितनी growth करेंगे, और strategic objectives के अंदर आ जाती है आपकी performance के साथ related जो होते हैं. Then we start making the strategic plan. Strategic plan mein, once you have developed the mission, then you have developed the objectives, then you talk about your strategic plan. In strategic plan you are talking about कि strategy formulate तो आपने कर ली, then आपने उसको implement करना है. In the implementation we are looking into इसको by the way strategic planning में strategic mapping भी कह रहे होते हैं. And in strategic implementation we are actually putting the theory into action. Whatever you have said कि जी हम ये काम करेंगे और हम इस तरह करेंगे, it's not what you're doing, it's basically how you are doing it. So what you are saying is कि जी हम उसको implement करते हैं. And implementation is not where this strategy things stops. उसके बाद क्या आ जाता है, we have to evaluate it. And in evaluation what I'm looking into is that whether you have succeeded in achieving your outcomes or not. And later on what we are trying to do is that changes आ सकते हैं, because there are external factors of an organization
आपके जो पेस्ट हम करते हैं, स्टेप एनालिसिस करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी। एंड फॉर दैट रीज़न जो स्ट्रैटेजी आपने मे बी 2015 के अंदर बनाई थी, इट मे नॉट बी वैलिड इन 2016 बिकॉज थिंग्स हैव चेंज। सो हम क्या करते हैं, देन वी स्टार्ट टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। सो ladies and gentlemen, that was something we covered in lecture number 2. Now today in lecture number 3 we are going to talk more about कि strategies कितनी किस्म की होती हैं, कौन सी होती हैं, and still mind you that this is again the recap, it's just developing your base कि हम जब strategy को later on जब पढ़ेंगे and with reference to operations तो आपको ये चीज़ें alien ना लगे, because we will be bringing these terminologies a lot कि जी हमने diversification कर दिया, हमने retrenchment कर दिया, and I assume when I say I assume it means कि I am thinking that you already know these things, ठीक है। Now अब हम क्या करते हैं, before strategy को अप्लाई करने के लिए we are actually doing the situation analysis। अब situation analysis क्या करता है, it basically tells you about your strategic options and your strategic opportunities, ठीक है। अब strategic analysis में क्या चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं, दो आपके factors इन्वॉल्व होते हैं, one is your external factor and another one is your internal factors। external factor के अंदर that is your macroeconomic environment, your industry, your competitive conditions which are uncontrollable। You cannot control inflation, you cannot control any disaster, so but we have to adapt according to your external factors। और in the internal factors आपके वो होते हैं, those are your microeconomic factors, your organization की जो internal situation होती है, employees आपकी कैसे हैं, आपकी competitive position क्या है, what is your niche skill by which you are going into the market। अब external factors को थोड़ा सा और अगर हम कर लें, एक्सटर्नल फैक्टर्स को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आपके आ जाती है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, फर्म नहीं, आई एम अ फर्म व्हेन आई एम अ कंपनी, बट जो आपकी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, दैट इज ऑल्सो इंडस्ट्री। उसके बाद आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी सर्विसेज है, जहाँ पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो एक इंडस्ट्री के अंदर है। सो उस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक ट्रेड्स क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर इफ यू हैव सीन द टेलीकॉम बूम हैज़ बीन हियर, every other person has been doing it. Now IT sector के अंदर बहुत सारा बूम आया है, and in IT sector we are looking into different options। हर कोई apps बना रहा है, everyone is making new softwares, innovation different किस्म की हो रही है। So what are the conducive factors that actually allow you कि भी मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, because that is giving a lot of profit, there are a lot of opportunities in that business। Then your competitive forces, आपकी कौन से कंपटीशन में competitive forces आती हैं। आगे जब हम माइकल पॉटर के डायमंड स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, you will still come to know a lot of things about it। फिर competitive moves of rivals। कोक कहता है जी I am going to reduce my price in Ramadan al Mubarak because आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी लोग ज़्यादा पीते हैं। so, जब आप प्राइस कम करोगे तो आपके रेवेन्यूज ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस के कम करने से आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सिमिलरली पेप्सी कहता है ओके, कोक इज रिड्यूसिंग द प्राइस, आई विल आल्सो रिड्यूस माय प्राइस। सो जहाँ पे आपको नजर आएगा कोक इज हैज साइंड अप एनी ब्रांड एम्बेसडर, उसने किसी क्रिकेटर को हायर अप किया, तो पेप्सी भी वही करेगा। उसने जनाब अपनी ये जो है प्राइस रिड्यूस की है, पेप्सी भी वही करेगा। एप्पल ने कहा कि जी आई विल ब्रिंग i6 इन द मार्केट, सैमसंग कहता है ओके आई विल ब्रिंग S5 S6, वो भी अपनी नई वर्जन से आता है। होंडा कहता है आई एम गोइंग टू ब्रिंग माय न्यू कार, टोयोटा भी लेके आ जाती है। सो व्हाट वी आर लुकिंग इज कि जी आपके कंपेटिटिव मूव्स क्या हैं, आपके राइवल्स के। फिर उस इंडस्ट्री में आपके की सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं, व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स। और लास्ट में क्या है कि इंडस्ट्री इटसेल्फ, ये हम मैक्रो में जिक्र कर रहे हैं, इंडस्ट्री इटसेल्फ कितनी अट्रैक्टिव है, लाइक सैचुरेट होगी हुई है या नहीं सैचुरेट, अभी उसमें कितना पोटेंशियल है कि अभी भी, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, टेलीकॉम सेक्टर में देयर इज स्टिल लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे हमें नहीं लगता, दैट्स व्हाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। सो वी हैव टू सी कि इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिवनेस, एंड दीज ऑल वेरिएबल्स आर कमिंग इनटू योर मैक्रो इकोनॉमिक और योर एक्सटर्नल फैक्टर्स जब हम सिचुएशन एनालिसिस कर रहे होते हैं। Now there is a very easy matrix that we talk about, and it actually gives you a clear-cut picture
about your organization, और हम उसको क्या कहते हैं, whenever we are trying to do the situation analysis, हम वहाँ पे एक चीज़ लगा देते हैं, that is your SWOT analysis. S stands for strength, W stands for weaknesses, E stands for, no, where is E? E नहीं है. O stands for opportunities and T stands for threats. तो आप देख रहे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स में व्हाट यू आर लुकिंग, यू आर सेइंग कि जी मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है. एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर यू आर लुकिंग इनटू दैट व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर योर थ्रेट्स, क्योंकि वो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं. सो व्हेन वी आर डूइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट है, और जब आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देख रहे होते हैं वो आपकी क्या बन जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एंड इफ यू डेवलप दिस मैट्रिक्स, कोई भी आपने एनालिसिस करना यू डेवलप में, दैट गिव्स यू वेरी क्लियर कट पिक्चर कि जो वेयर डू वी स्टैंड, और हम यहाँ से फ्यूचर में कहाँ पे जा सकते हैं, गिवन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, गिवन द स्ट्रेंथ्स ऑफ माई फर्म, गिवन द स्ट्रेंथ्स ऑफ माई एम्प्लॉयज़, गिवन द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गिवन द गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज़. फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर को उसने टैक्स पाक किया हुआ है, इट सेज कि जी आप टैक्स बहुत कम किया हुआ, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो इस किस्म की चीज़ें आपको बताती हैं कि जी इंडस्ट्री ल्यूक्रेटिव है, शैल वी गो फॉर दिस बिजनेस और नॉट. अब ये जो 5 फोर्सेस मॉडल है, इसको डायमंड मॉडल भी कहते हैं, ये आपका दिया था माइकल पोर्टर ने. माइकल पोर्टर इज अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ स्ट्रैटेजी, है भी स्ट्रैटेजी का, एंड अगेन ही इज फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी विच आई ऑलवेज रेफर टू, दैट इज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का है. एंड इसका अपना एक ही ऑल्सो गेव वन थियरी दैट इज नोन एज थियरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज. Very renowned professor, and I will tell you one of the incidents later on, I hope so, in this lecture. But Porter ने कहा कि जी अगर किसी firm की अगर आपने growth देखनी है, या और if you want to have to give a sustainable competitive advantage, so what you're looking into, आपने ये 5 चीज़ें देखनी है, and it's just like a diamond. Every factor is actually reinforcing each other. अब वो reinforce कैसे करता है? The first one is your rivalry among sellers, आपके जो competitors हैं, what kind of rivalry you are having. अब इस पे I also, जो modern literature है, इसमें अब एक चीज़ आती है कि शुरू में वी वर टॉकिंग अबाउट कम्पिटिटिवनेस. इफ़ यू रिमेंबर लेक्चर 1 मैंने उसमें भी जिक्र किया था कि पहले हम कंपटीशन की बात करते थे, येस वी आर राइवल्स, वी आर कम्पीटिंग विद ईच अदर. लेकिन अब क्या आया है, नाउ देयर इज़ कोलैबोरेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो में अब कंपटीशन से ज़्यादा कंपनीज अब कोलैबोरेशन में काम करते हैं, बिकॉज दे फील कि जी कोलैबोरेट करेंगे तो देयर इज़ मोर प्रॉफिट्स, एंड दैट वी हैव सीन. मसलन गूगल ने टैगवायर के साथ भी वो किया है, कोलैबोरेशन की है इन ऑर्डर टू काउंटर एप्पल की जो वॉच आई है. ठीक है, सो इन दिस वे नाउ कोलैबोरेशन ज़्यादा आ गई, बट स्टिल इट डजंट मीन कि जी पेप्सी और कोक आपस में मर्जर हो रहा है. नो, राइवलरी स्टिल एग्जिस्ट्स, लेकिन वो किसी और फर्म के साथ कोलैबोरेशन करके दे वांट टू बिकम बिगर. वो जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे एक्विजिशंस की, कि जी फर्म्स यहाँ से फिर ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही होती हैं, आइदर दे आर गोइंग विद द एक्विजिशंस दैट दे आर वो जो हायरिंग करते हैं. ठीक है, नाउ दैट इज नंबर 1 फैक्टर, दैट इज राइवलरी अमंग सेलर्स. उसके बाद आपके पता चलता है दैट व्हाट आर योर सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के अंदर ये होता है, फॉर एग्जांपल वी एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कोक का सब्स्टिट्यूट फैक्टर सबसे बड़ा है आपका पेप्सी, बट अगेन दैट इज नॉट द ओनली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. There is Ruh Afza, there is Jame Shirin, there is juices. So all are these drinks. So they are all substitute products of your product. फिर आपके buyers कौन से हैं? वो number 3rd factor is your buyers. And after the buyers, then you have your suppliers. Suppliers होते हैं people who are actually supplying you with the raw material, and what kind of suppliers you have. अगर आपके suppliers के साथ अच्छा sustainable relationship नहीं है, that is definitely going to hurt your product quality and your product process. फिर sorry about that. Potential entrance देखते हैं कि once you are having a good industry, ठीक है ना, इंडस्ट्री आपको बहुत प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, पीपल आर कमिंग इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट. तो अब पोटेंशियल एंट्रेंस क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे. फॉर एग्जांपल शुरू में अगर आईटी सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो जैसे ही वो आपको प्रॉफिट देना पड़ा, यू वुड सी द मशरूम ग्रोथ ऑफ आईटी कंपनीज इन पाकिस्तान.
टेलीकॉम में आई रिमेंबर द फर्स्ट कंपनी वाज आई बिलीव पार्कटेल आई थी, इंस्टा फ़ोन हुआ करती थी, एम्स, और ये उसके बाद आपकी आ जाती है मोबाइल लिंक आ जाती है, देन आप देखें आते 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 कितनी ज़्यादा आपकी कंपनीज आ गई हैं। सो आपकी जो इंडस्ट्री होती है दैट एक्चुअली ऑल्सो टेल्स यू कि उसमें कितनी पोटेंशियल एंट्री है, या कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, सो दैट न्यू कमर्स कैन कम इनटू योर इंडस्ट्री। लेकिन जैसे जैसे आपके न्यू कमर आ रहे हैं आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे हैं, आपका कंपटीशन ज़्यादा कट थ्रोट हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स analysis of these competitive forces. Now, वो जो last अभी जो I have shown you the slide that is basically with reference to the जो माइकल पॉटर का जो मॉडल था, अब it is basically telling you कि जी आपने अपनी competitive forces को देखना है in order to analyze the industry. अब ये already इसने बता दिया हुआ है, if you look in the slide कि जी आपकी rivalry among competitors है, substitute products है, potential entry है, bargaining power of suppliers है, bargaining power of buyers है. Then रेट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच कंपेटिटिव फोर्स, फिर आप एक स्केल के ऊपर इनको देखते जी हर फोर्स की कितनी स्ट्रेंथ है, विच फोर्स इज मच स्ट्रोंगर, एंड देन यू टॉक अबाउट कि एवरी फोर्स, ये जितने भी ये फैक्टर्स हैं इनका क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ द टोटल कंपेटिटिव एडवांटेज। सो दैट इज़ वन वे, हमने स्वॉट किया, सिचुएशन एनालिसिस की, ये फोर्सेस एनालिसिस किया पोर्टर का। नाउ वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल स्कैनिंग, और ये अब देखें ये वी आर जस्ट एक्चुअली डूइंग इट कि जी व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो एंड वी ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर विद रेफरेंस टू योर प्रेजेंट सिनेरियो। सो अनदर वे ऑफ मॉनिटर and interpret social, economic, political, ecological, technological event in effort to spot trends and conditions that could eventually impact industry and organization. That is known as environmental scanning, और इसमें आपके वही pest analysis आ जाता है। अब the purpose of environmental scanning is to raise consciousness of managers. अब ये भी क्या है, external factors हैं, uncontrollable हैं, about the potential developments that could have been an important impact on industry conditions and pose new opportunities and threats. External side, opportunities and threats, if you remember, हमारा external factor है। अब क्या होता है when you are trying to assess these competitive positions, what you are looking is that आप अपने strategic groups बनाते हो। Strategic group क्या होता है? Strategic group consists of those rival firms with similar competitive approaches and positions in an industry, जो कि आपके साथ की same strategies लगा रहे होते हैं। अब a strategic group displays different competitive positions that rival firms occupy. ठीक है, तो वो अपनी different वो स्केल के ऊपर अपनी वो पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोक की जो है और पेप्सी दे कांट बी सेम इन टर्म्स ऑफ योर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, उनकी डिफरेंट होगी। Organizations in the same strategic group have one or more competitive characteristic in common. उनके पास almost कोई ना कोई characteristic common होता है। For example, sell in the same price. Pepsi, Coke, classic example. Cover the same geographic area. आप एक ही एरिया के अंदर दोनों प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। Be vertically integrated to the same degree. Emphasize same types of distribution channels. Distribution channel में may be wholesalers से या manufacturing से सीधा सारी supply chain they own it, या जो जो उनकी supply chain में है वही वही दूसरी company की supply chain में, so it is almost similar. Then offer buyers similar services and use identical technological approaches. इसमें commonalities होंगी और इसीलिए they are placed in the same strategic group. और जब स्ट्रेटेजिक ग्रुप आपका बन जाता है देन आई कैन ईजिली असेस कि मेरा राइवल क्या मूव्स कर रहा है, आइदर यू कॉपी इट और यू कम्पीट विद इट, कि जी आप उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी आप लगाते हैं। अब सॉरी, कंपेटिटिव एनालिसिस इज अनदर काइंड ऑफ एनालिसिस। अभी हम सारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए अभी सारे हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजी इज अफेक्टेड बाय करंट स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपेटिटर्स, ऑब्वियसली दैट इज वेरी ट्रू। अगर पेप्सी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेता तो कोक को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, आइदर यू एक्ट और यू रिएक्ट। अब एक्शंस कंपेटिटर्स आर लाइकली टू टेक, या फिर आपको लगता है कि भाई ये एक्शन कंपेटिटर ने ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई थिंक गुल अहमद स्टार्टेड इट्स जो अनस्टिच्ड कपड़े से देन दे स्टार्ट गोइंग फॉर द स्टिच्ड क्लोथ, और उसने अपना पूरा एक, अब तो ये पूरे वो हाउसेस बन गए हैं जहाँ पे दे आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग, दे हैव स्टार्टेड बेड शीट्स, लिनन्स, फर्नीचर एंड ये सारा कुछ। चैनवन आया आपका, अलकरम आ गया। सो
आप कंपेटिटर्स जो करने भी लगते हैं इसी तरह आप दूसरा कंपनी भी वो कर रही है। अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक शैम्पू के साथ आएगा तो यू वुड सी यूनिलीवर भी दूसरे शैम्पू के साथ नया को निकाल देगा। सेफगार्ड कुछ करता है तो डिटॉल भी कुछ करेगा, ठीक है। सो आपको ये होता है दैट वंस एन ऑर्गेनाइजेशन, an X organization make any strategy, it is definitely going to impact the Y organization, और Y organization उसके in response कुछ ना कुछ करेगी। अगर वो नहीं करती, that is also one of strategy तो नहीं आप कहते, लेकिन you have to respond. Sometimes companies don't, और उसका classic example है नोकिया। जब स्मार्टफोन्स का आ रहा था, एंड यू विल बी अमेज्ड कि नोकिया वाज द फर्स्ट वन टू एक्वायर द स्मार्टफोन्स। नोकिया ने बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज लगाई। अ फिनिश कंपनी जो कि शुरू में टॉयलेट पेपर बना रही थी, इट वाज इन द पेपर इंडस्ट्री, एंड दिस पेपर इंडस्ट्री गॉट सो मच सैचुरेटेड कि दे सेड कि वी नाउ वेयर टू गो, उन्होंने completely U-turn लिया, and a company which was in the paper industry, which was making toilet paper, वो क्या करती है, it comes into electronics, and with a span of few years, Nokia becomes the market leader. May it be European market, may it be African market, Asian market, American market, Nokia was everywhere. Because of its design, because of its simplicity, because of its user-friendly phones, because of its वो जो थी the quality of the phone. अब क्या हुआ कि Nokia thought that it is a market leader and is never going to be superseded by any other company. Later on what happens that आपका Motorola Razr आया, and Motorola Razr actually gave a jerk to this Nokia. Still उसने कोई इतना feel नहीं किया. And Nokia was the first company who actually had the smartphone technology, but it never came into play because Nokia felt so proud कि जी जो हमारे phones हैं उनका कोई competition हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपका Apple आ जाता है, completely it had वो जिसे कहते हैं ना, totally उसने Nokia की market को top down कर दिया, यानी कहाँ पे वो ऊपर थी और उसने बिल्कुल उसको नीचे कर दिया। Then comes your Samsung. And what Nokia was in this assumption कि no matter what, our phones are always going to be liked by people, जो इतना बड़ा market share exist कर रहा है, लोग इतनी जल्दी हमारे phones को नहीं छोड़ेंगे। And the same thing happened. It never did anything, or ultimately Nokia, I doubt कि now people buy Nokia. Everyone is getting other smartphones. Then Nokia was in a fix, and अगर अभी आपने देखा हो in past 1-2 साल में Microsoft has actually acquired Nokia, and if you go to Denmark, Finland, yeah, so वहाँ पे you would see कि जी अब Nokia की head office के ऊपर Nokia नहीं Microsoft आया हुआ। अब Microsoft, because Microsoft की जो leadership थी वो आई Nokia के अंदर, they started changing, और उन्होंने उसको Nokia Lumina आ गया। It is still trying to compete, लेकिन it is unable to. So if you are not actually looking at the current strategies of your competitors, and you feel that I am the market leader and don't have any issues with that, so wahi company which was giant company, you can see that no one talks about Nokia. I still remember my first phone was Nokia. Now I don't like because smartphones के अंदर Nokia ने उस तरीके से अपनी growth की नहीं. So therefore changes do come, and what we have to do is that you adapt to these changes, the changes which are uncontrollable. जिन्होंने आना ही है, आप ये नहीं कह सकते नहीं जी I'm not going to change. So आपको उसके हवाले से अपनी strategy formulate करनी है. And if the competitor takes advantage, जिसको हम first mover advantage कहते हैं कि competitor पहले चला गया, then he takes the market share. वो कहते हैं early bird takes the worm, something. So we have to be very very much particular कि जी हम किस market में जा रहे हैं और किस तरीके से जा रहे हैं, हमारे कितने competitors हैं, who is doing what, and this is how you're going to do it. Now profile of key competitors involved, starting कि अगर आपने competitors की profile देखनी तो आपने क्या देखना है, आपने देखना होता है कि industry के अंदर हर competitor की क्या rating है, where are they actually standing. Then what are the strategic objectives and recent business plans of each competitor? क्या उनके objectives हैं? Because there obviously you can by annual reports you can decipher कि जी ये इनके objectives है, ये उन्होंने achieve कर लिया, ये उन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने vision या ये उन्होंने objectives for the next year रखे हुए. And then you are looking at कि in order to compete, what kind of competitive approach they are actually applying. So this is what you are looking into. After that,
सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज टेक इनटू अकाउंट। जब आप सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज को देख रहे होते हैं, इट्स बेसिकली कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई एम फॉर्मुलेटिंग माय स्ट्रैटेजी, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट माय कंपेटिटर्स स्ट्रैटेजी इज। देन यू एवेल्युएट देयर वल्नरेबिलिटी टू ड्राइविंग फोर्सेस एंड कंपेटिटिव प्रेशर्स। उसके बाद साइजिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ईच कंपेटिटर। आपको अपने कंपेटिटर का हमेशा पता होना चाहिए एंड एंटिसिपेटिंग एवरी कंपेटिटर्स नेक्स्ट मूव, बिकॉज if the competitors start giving you surprises or aapka, oh, I never knew this was such a brilliant opportunity, it's going to be different. Do you remember jo tha Lifebuoy? When Lifebuoy was launched, shuru mein the way it was positioned in the market, it was totally different. uske baad aapke kafi wo medicinal soaps aaye, and then it was Safeguard, it was Dettol and all that. uske baad Lifebuoy just took a complete remarkable U-turn और उसने अपने आप को जो ब्रांड किया, the soap earlier just for the blue collar class, red color का रंग होता था, now they have totally turned into a complete medicinal soap, and they say कि जी आप ये वाला use करें, that has much better performance, नीम के साथ ये वो. So what are they actually looking at? कि जी competitors को जब देखते हैं कि जी well this is an opportunity, यहाँ पे people are more sensitive कि जी dirt ज़्यादा हो गई है, dust ज़्यादा हो रही है, so now we should not be just catering to the this blue collar class, let's go a little bit higher up, और अपनी advertisements को इस तरीके से punch करें, अपने आप को position ऐसे करें that people accept it, and yes, people accepted it. Lifebuoy अभी भी अगर आप उसका market share देखें, it is much more competitive with Safeguard or Dettol. So you need to understand who is your competitor and how he is behaving, और आपने उसके response पे कैसा behave करना है, या how he is going to behave. ठीक है? Sometimes you just act before your competitor is doing it. For example, कोई announce कर देता that okay, I'm going to come up with this new model, so that is always creates something kind of anxiety, curiosity कि जी model नया कैसा होगा, and the other companies also start working on the same models. Recently अभी वो आई Fast and Furious 7 आई, and before Fast and Furious 7 was going to release, उसने ऐसी hype create की हुई थी. What they did was they made another replica of a car movie Fast and Furious so that it can create some kind of ripples in movie industry. उसने कहा ये तो Fast and Furious जैसी ही movie है, so that people may have divergent interests into it. So before any competitor come and जिसे कहते हैं launch its product या कुछ करने लगे, आप उससे पहले भी react कर सकते हैं, आप उससे पहले भी action ले सकते हैं. ठीक है? So that is basically your competitor analysis. Okay. Now coming on to the next work after competitive analysis, we talk about Kiji, what is happening in your industry and what are the key success and failure indicators. अब key success factors spell the difference between जो success factors वो क्या रहते हैं कि either you are going in profit or you are going in loss, या आपका कोई competitive success मिली है या आपका कोई failure मिली है. A success factor can be specific skill, maybe आपके पास वो skill है और किसी के पास नहीं है. Steve Jobs, your competitive capability and something an organization must do to satisfy their customers. Like customers को अगर आपने satisfy करना है तो there are so many ways. Some customers just got satisfied कि जी आपने उनको अस्सलाम वालेकुम कर दिया, and some customers को आप सब कुछ करते हैं, they are unsatisfied because they are looking for something which no other company is offering them. और अगर कोई company वो offer कर देती है, they become their loyal clients. Now how to determine that? That is basically varies from company to company, varies के कहाँ पे आप वो service दे रहे हैं. Now if you're opening a shop in KPK and you are asking the people to speak English, good morning sir, how are you, how may I help you, it is not going to work. But the same thing can work in Islamabad. It may not work in KPK because over there you have to speak your the Pashto. So depending कि कहाँ पे कौन सा कस्टमर है, आपने वैसी उसको कस्टमर सर्विस देनी है. किस एरिया में आपने शॉप करनी है, वैसे ही आप डिकोर रखते हो. किस कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, आप उसकी जो एडवर्टाइजमेंट लॉन्चिंग है वो बिल्कुल वैसी करते हैं ताकि आपका कस्टमर क्या हो, ही गेट्स इनटू अ
कंफर्ट जोन। सो ये फैक्टर्स आपके सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, आपका कोई स्पेसिफिक टैलेंट है या आपका कोई स्किल है। नंबर 2, योर कंपेटिटिव कैपेबिलिटी। एंड नंबर 3, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने कस्टमर्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। नाउ बीइंग डिस्टिंक्टिवली बेटर देन competitors in one or more than key success factors, and that gives you a competitive advantage. कि मेरा competitive advantage ये है that I am based in Islamabad, so therefore I can always target the diplomats. अगर कोई बंदा लाहौर के अंदर बैठा हुआ है और वो कहता जी मैंने कोई डिप्लोमेट्स के लिए प्रोडक्ट बनाना है, उसका वो कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है जो मेरा है, बिकॉज आई हैव अ क्लोज रैपर विद देम। उनका प्रोडक्ट लाहौर से बन रहा है, मेरा प्रोडक्ट इस्लामाबाद के अंदर बन रहा है। सो ये आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपको क्या दे देती है, कंपेटिटिव एडवांटेज दे देती है। मे बी मेरी जो ह्यूमन रिसोर्स है, दे आर ऑल ग्रेजुएट्स फ्रॉम वर्चुअल कैंपस, सुपर्ब ग्रेजुएट्स, और जो बाकी यूनिवर्सिटी, जो बाकी कंपनी में लोग हैं, उनके पास ऐसे अच्छे ग्रेजुएट्स नहीं हैं। सो दैट गिव्स मी अ कंपेटिटिव एडवांटेज दैट माय एमबीएस आर मच बेटर एज कंपेयर्ड टू अदर्स। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ कंपेटिटिव एडवांटेज. Now, key success factors consist of 3 to 5 major determinants of financial and competitive success in an industry. All clear. Now we talk about competitive strategy. Competitive strategy is very important. What we are looking is that it basically moves to attract customers. इसलिए हम competitive strategy बनाते हैं ताकि हम अपने customers को क्या करें, attract करें. जो हमारे competitive pressure है, we can actually stand that, and then we strengthen the company's market positions. Now the objective of competitive strategy क्या होता है? It is to generate a competitive advantage all the time, कि आपको हमेशा edge हो अपने competitors से. It increases the loyalty to the customers and it beats the customers. Sorry, not beat the customers, but beat the competitors. If you are going to beat the customers, they are going to beat you back and you're out of the market. So therefore don't beat the customers, but beat the competitors. Then there are basically 5 competitive strategies जो कि हम बात करते हैं, and I'm sure you people must have studied it. Number 1 is your overall low cost leadership strategy. Low cost leadership strategy होती है. Number 2 आपकी cost provider strategy होती है. Number 3 broad differentiation strategy. Number 4 focused low cost strategy, and number 5 focused differentiation strategy. We will do these strategies one by one, but ये आपको strategies पता होनी चाहिए. That develops into competitive strategies. कि जी आपकी 5 किस्म की competitive strategies हैं. Now let's go on to our first strategy, and that is your competitive strategy, and that is your overall low cost strategy, leadership strategy. What we are looking is that we as a firm in an industry, we are the lowest cost provider in the industry. अब हम इस low cost लीडरशिप कैसे हम लेके आ सकते हैं? नंबर 1, स्क्रूटनाइज ईच कॉस्ट एक्टिविटी. अब आपने किसको देखा हुआ, यू आर नॉट लुकिंग एट द फॉरवर्ड लिंक, यू आर लुकिंग एट द बैकवर्ड लिंक, कि आप अपनी प्रोडक्शन को इस तरीके से करें कि जी आपका हर जो प्रोसेस है, एवरी स्टेज वो आपको क्या दे, लो कॉस्ट आपको फैक्टर्स दे. नंबर 1 इज कि आप अपने हर स्टेज को क्या करें, स्क्रूटनाइज करें इन टर्म्स ऑफ योर कॉस्ट एक्टिविटी. देन मैनेज each cost lower year after year. देखिए हमने टारगेट ये रखा हो कि इस दफ़ा इस ईयर if the cost of this product is 10, then next year it should be 9, next year it should be 8. तो इस तरीके से आपने अपने टारगेट्स रखे हुए हैं. Then re-engineer the cost activities to reduce overall costs. उसके बाद cut some cost activities out of the value chain. या जो मसलन ट्रांसपोर्ट है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो लेट्स गुड यूज़ द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स को आप दे दें, सो दैट आप पे बर्डन कम हो जाए, तो आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं. सो क्या यू कैन डेवलप द कॉस्ट लीडरशिप मॉडल. देन कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ ओवरऑल लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होंगी? ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर पोजीशन टू compete offensively ऑन प्राइस, क्योंकि प्राइस इज इक्वल टू, उसके अंदर आपकी कॉस्ट भी होती हैं और उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी होता है. लेकिन जो कॉस्ट होती है, इट इज़ जस्ट योर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर एबल टू नेगोशिएट विद लार्ज कस्टमर्स, तो आप कस्टमर्स के साथ आपकी नेगोशिएशन बेटर हो जाती है बिकॉज यू आर ऑफरिंग अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट. देन you can able to use price as a defense against substitutes. People would say, why to buy an expensive phone when you are getting this low cost phone and it has all the functions? क्यों मोबाइल जिस तरीके से आया, शौक हर को स्मार्टफोन का, but they say okay, if I can't afford an
80,000 का अगर मैं आईफोन नहीं ले सकता, लेट्स हैव स्मार्टफोन और क्यू मोबाइल, ठीक है, तो दे आर प्रोड्यूसिंग चीप फोन्स. देन ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इंसुलेटेड फ्रॉम पावर ऑफ सप्लायर्स. तो आपकी जो सप्लायर्स जो रॉ मटेरियल देने वाले होते हैं उनके साथ भी आपकी इंसुलेशन, यानी आप यू आर हैव अ गार्ड अगेंस्ट देम टू. Now, when does an overall low-cost strategy works at the best? कब ये strategy काम करेगी? Number one, when price competition is a dominant competitive force. Once you're doing the competitive analysis, if you see कि जी price सबसे बड़ा factor है जिसकी वजह से you can actually have more customers, तो जब आप अपनी price को कम करते हैं तो you have more customers. तो आप वहाँ पे आपकी ये वाला factor, ये वाली जो strategy है आपकी चलती है. अगर price is very crucial, when people are very price conscious, then the product is a commodity, यानी it is a commodity, it is not a service. तो commodities के अंदर ही ज़्यादा चलती है because आप उसकी cost हर पे कम कर सकते हैं. Then there are few ways to differentiate product. आपके ज़्यादा तरीके ना हो, but जितना आपके minimum तरीके होंगे differentiation के, उतनी ज़्यादा आपकी market leadership होगी. Then most customers have almost the same needs or requirements. सारे customers चाहते ही हैं कि okay, we need this commodity, we need this product, ठीक है. Then customers incur low switching costs changing sellers, और customers को इतना ज़्यादा burden ना हो if they move from commodity A to commodity B, क्योंकि commodity B is now following this low cost strategy. And customers are large and have significant bargaining power. Customers की जो quantity हो large हो, वो bargaining में ज़्यादा stronger हो, क्योंकि when customers bargain they always go for the low price. अब कहाँ पे ये वाली strategy काम नहीं करती? Let's see. When the technological breakthroughs open cost reductions for competitors, negating the low cost providers efficiency advantage. एकदम एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसने सिर्फ आपकी कॉस्ट को कम नहीं किया, बल्कि it has actually changed the whole scenario of the whole firms in the market. Then there is no skill of yours कि आप इस strategy को use कर रहे हैं. So better not use that strategy if you know कि कोई ऐसी technologies आ रही हैं या आने वाली हैं where it is going to reduce the cost of all the products. Then competitors find it relatively easy and inexpensive to imitate the leader low cost methods. आपने methods कुछ ऐसे employ किए हैं which has actually reduced your cost and it is very easy to replicate it in another firm, क्योंकि आपका competitor भी कोई वो जिसे कहते हैं dumb तो नहीं, he whatever you are doing he is also looking at your activities. So if you can reduce your cost, he will also change his process and he can also reduce the cost. Then लो कॉस्ट लीडर फोकसेस सो मच, आप इतनी कॉस्ट को कर रहे हो कि आप कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्ड या इग्नोर कर जाते हैं या उसको ओवरलुक कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल चेंजेस इन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी एंड सर्विस. कस्टमर कहते हैं मुझे क्वालिटी चाहिए, ठीक है, इट्स योर प्रोडक्ट इज चीप बट आई ऑल्सो नीड क्वालिटी. सो मे बी आप कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में आपने अपनी क्वालिटी सारी क्या कर दी, रिड्यूस कर दी. देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, आप फिर एक ही प्रोडक्ट की लो कॉस्ट करते जा रहे हैं. यू आर नॉट वर्किंग ऑन इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एंड कस्टमर्स की सेंसिटिविटी टू प्राइस में भी आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इतनी ज़्यादा ना हो. इट इज़ हाईली इनइलास्टिक. नंबर 2 इज़ योर ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज. ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या करते हैं, दैट यू आर गिविंग प्रोडक्ट्स विच आर much more diverse as compared to your competitors. Then what are the success factors? You differentiate to create value for customers that are not easily copied. Not spending more to differentiate than price premium that can be charged. Price को भी अभी तो increase नहीं करते, लेकिन उसी price के अंदर आप ज़्यादा variety दे रहे हैं, ठीक है. Classic example would be iPhone versus Samsung. Whatever iPhone comes with, Samsung कहता है no, my product is almost the same price, या उससे थोड़ा सा कम है, but I am offering you much more apps as compared to I have Android, अगर वो iOS use करता है, ठीक है. So a successful differential strategy allows the organization to set a premium price. You can set up a premium price because you are differentiating it and no other competitor is actually giving you that options. Then you can increase the unit sales and you can build your brand loyalty. Nike, Adidas, Reebok, ये सारे क्या हैं तो joggers, लेकिन अपनी उन्हें brand loyalty develop करनी है. अब कहाँ पे what are the areas where you can actually have these differentiation opportunities? It is in your supply chain, it is in your research and development, it is in your production activities, the operations guys, and it can be in your marketing, sales, and your after-sales service. What are the strengths of your differentiation strategies? Number 1, that customers develop
loyalty with the brand. Customer कहता है, I am getting so many things in this product, I am going to stick on with this product. उसके बाद organizations are better to fend off the threats of substitute products because of the brand loyalty. क्योंकि brand loyalty आ गई है तो वो जो substitute products हैं वो फिर इतना ज़्यादा role नहीं play करते because customer is very much liking your product. He's actually using your product. Then it reduces the bargaining power of large customers since brands are less attractive. Then seller may be in a better position to resist efforts of suppliers to raise prices. Okay? So these are basically your, but what are the negatives or what are the pitfalls in the differentiation strategy? अब क्या होता है कि trying to differentiate on unimportant product feature doesn't result in providing the more value to the customer. आप में भी उस चीज़ पे ज़्यादा focus करें which the customer is not even asking for. So you have to see कि what exactly is the customer pain हम उसको कहते हैं. Customer चाहता है क्या इस product के अंदर और क्या आ जाए. I'll give you a very interesting example. India की है. What they did was that everyone knows कि जब भी rain होती है तो what we go for these umbrellas. Yeah, we go for these umbrellas and umbrellas के अंदर ये हुआ कि there was an Indian company and it was producing umbrellas and all of a sudden people moved towards Chinese products क्योंकि वो cheaper products थी, low cost leadership, and they started buying that product. Now this organic company, made in India company, got worried कि they have actually moved all the customers आपके ख़त्म हो गए, brand आपका ख़त्म होता जा रहा है. So they said कि जी हमें क्या करना चाहिए, we have to go for a different kind of strategy. और हम क्या करें, हम अपनी umbrellas के अंदर innovation लेके आए. हाँ, now what innovation you can bring? Now what they did was उन्होंने जनाब umbrellas के अंदर innovation कैसे लेके आया, that change the colors, change the quality, change the design. ये तो बाकी competitors भी कर सकते हैं, Chinese umbrellas भी कर सकते हैं. Now if you know कि वहाँ पे इंडिया में women work, और उन्होंने क्या कहा, umbrella एक लेके आया और उसको उन्होंने कहा जी ये bodyguard है, and they named that umbrella as a bodyguard umbrella, और उसके अंदर they provided a torch, and the way they pitched it, उन्होंने कहा जी when you are with this umbrella, it's not that you are traveling alone, you have a bodyguard with you. Another innovation in that umbrella was in one of their umbrella कि उसके अंदर उन्होंने FM radio लगा दिया. So इस किस्म की चीज़ें करके they again regained their momentum. So ये क्या differentiate कर रहे हैं अपने product को. So आपने वो चीज़ customer को देनी है which he is important. When women go abroad, when women are traveling, so it is important that okay someone travels. Only ये concept you are not. So that is something the customer pain. अब मैं कुछ और ले आऊँ, मैं रंग ले आऊँ, मैं कुछ ऐसी innovation लेके आऊँ या इस तरीके से differentiate करूँ which the customer doesn't even want and it's highly unimportant. So that is a problem. Then over differentiating the product such that product features exceed the customer needs. आपने exceed भी नहीं करना customer की need को. And then you are charging a price which is very high, which is not even वो जैसे कहते हैं ना, not even matching कि जो आपके product का feature है आप उस पर बहुत ज़्यादा price charge करते हैं. उसके बाद ignoring the need to signal value. Product का जब भी आप feature डालते हैं it should actually signal that value. Apple क्यों 85,000 90,000 का है, क्योंकि एक value वो signal करता है. It's metal body है, secure है, cloud computing, ये वो everything they just market their features. So people buy it. और सबसे ज़्यादा क्या brand loyalty है. Then not identifying what customers consider valuable. So इसके अंदर if you look at this strategy, differentiation strategy, the main point would be that you have to deliver those products, you have to go for those changes which the customer is asking for. तभी he is willing to pay a premium price. If the customer doesn't ask for those things, don't go for it because that may actually harm your organization rather than helping you. Then comes your third strategy, that is your best cost provider strategy. Best cost provider strategy is basically कि अब आप जो पहली दोनों strategies थी, low cost और differentiation, दोनों को merge up कर देते हैं. That you are actually giving better money, but you are also following on the low cost. Striving to give customers more value for the money by combining an emphasis on low cost with an emphasis on upskill differentiation. यानी you combine low cost and differentiation. अब इसके अंदर क्या होता है कि you are actually saying कि देखो
मैंने आपको कम प्राइस के अंदर आपको ज्यादा सारे फीचर्स दे रहा हूं. दैट इज नोन एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? इट एडवांटेजेस यू, क्योंकि आपने अपने जो कंपेटिटर के प्रोडक्ट है उसको आपने प्राइस की बेसिस पे बीट कर दिया, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट भी कम कर दी, आपने प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स भी लिए हैं, एंड you are actually competing with them on two levels. One is at the point of cost, and another is at the point of product differentiation. Then you are managing both these things simultaneously, and you overall beat the best cost provider can often beat on overall low cost strategy and broad differentiation, where अब competition है, there are so many competitors, एक competitor low cost कर रहा है, एक competitor differentiation कर रहा है, you are following the best cost provider strategy. तो जो best cost provider वाला होता है, he actually supersedes both of them. How? Because customer diversity makes product differentiation the norm. क्योंकि हर कोई customer differentiation चाहता है, customer diverse है, and many customers are price and value sensitive. ठीक है, वो दोनों आपकी चीज़ें, इस वजह से ये वाला जो है individuals या companies which are actually using the best cost provider strategy, they actually are in better off in terms of the other two. Then comes your focus strategy. What we are talking about focus strategy, it is based on the low cost. And if you see, सारे low cost कर रहे हैं. Price plays a very important role. और price को कम किस तरह किया जा सकता है अगर आपकी cost कम होगी. Concentrate on narrow customer segment, beating the competition on a lower cost. अब आप एक narrow segment, अब आप focus कर देते हैं, हम इस वाले customer base पे हम जाएंगे. Focus strategy is based on differentiation, offering niche customers a product customized to their needs. अब मैं एक restaurant खोलता हूँ, either I can open it in a posh area or I can open it in a normal, mediocre, middle class area. If I'm opening it in a posh area, what I do is कि मैं अब जो उस customers का जो mindset है, जो वो चाहते हैं, मैं बिल्कुल वैसा करता हूँ. Now you have seen कि restaurants के अंदर there is a concept of open kitchens. Open kitchens either तो chef आपके सामने आके cooking करता है ताकि आपको पता चले जी इसने food prepare कैसे किया, और you can go और उन्होंने अपने kitchens को क्या किया, वो glass के कर दिया, more transparent. So focus वो क्या कर रहे हैं जी, customers actually देखें that how the food is being prepared, हमारा process कितना साफ है, जो बंदा खाना बना रहा है he is very hygienic, हाथ में से ग्लव्स पहने हुए, ऑल दैट. तो वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कस्टमर के ऊपर. डिपेंडिंग क्या, जितना होटल छोटा होगा उनका बिल्कुल ही वहाँ पे तो शीशा भी नहीं लगा होता, बट पीपल डोंट लाइक. ठीक है, सो बोथ आर डूइंग इट, बट बोथ आर डूइंग इट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, कीपिंग इन माइंड द कस्टमर. सो यू कीप अ वेरी नीश kind of customers in your mind, and you actually customize your product according to their need. Now, how this strategy is going to be successful? जहाँ पे customers की क्या होगी, preference distinctive होगी, जहाँ पे आपके customers की special needs होंगे, तभी आप ये वाली focus strategy कर सकते हैं, क्योंकि you are just giving what the customer is asking. You are not doing anything else, and you develop a unique ability to serve the needs of niche target market. There are a lot of pizza shops now कि आपने जैसा पिज़्ज़ा चाहना है, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, we will do it. केक शॉप्स अब बन गई, कस्टमाइज्ड केक शॉप्स. वो क्या है, वो वही लोग कर रहे हैं. अदरवाइज यू कैन गो टू गुरमे, यू कैन गो टू सरीना, यू कैन गो टू अवारी, यू कैन गो टू एनी अदर बेकरी और बाय एन ऑर्डिनरी केक. लेकिन अब फोकस स्ट्रेटजी कही जी, मैं आप कहते जी मैंने बे मैक्स बनवाना है या मैंने वो फ्रोजन के थीम का केक बनवाना है. सो दिस वन पर्सन यू नो दैट हु कैन मेक इट. आप सरीना नहीं जाओगे या आप गुरमे वालों को नहीं कहोगे, यू जस्ट गो टू दैम बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन इट, और उसकी जॉब है, ही विल चार्ज यू अ हाई मनी, but he'll give you the value what you're asking for. So that is basically that strategy on focus strategy. Now what makes a niche attractive? Niche is a segment जिसके हम ऊपर क्या कर रहे हैं, focus कर रहे हैं, because niche is basically it is large enough to make you profitable. It has a good growth potential. There is no critical to success of major competitors. Then organization has resources to effectively serve the niche. हमारे पास resources होते हैं कि हम उस particular class को हम serve कर रहे होते हैं. Then accordingly, an organization can defend itself against the challenges through a superior ability to serve the niche. And no competitors are focusing at the niche. और वो जो competitors होते हैं वो फिर उस Gourmet is not going to compete with one baker who is saying कि जी मैं customized cake बनाता हूँ. Gourmet is going to compete with Shizan. तो आपका competition भी क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है.
what are the strengths and weaknesses in your focus strategies. That you can read in the slides that I'm going to give you, because let's move on. कि जी आपको ये तो पता चल गया what are the positives, what are the negatives. So I'm just skipping it. Let's move on to the next one. So from single business to diversification. जब आप एक आपका छोटा सा बिजनेस होता है, आप उससे डाइवर्सिफाई कर रहे हो, दैट इज बेसिकली हाउ डू यू डू दैट. इसकी चार स्टेजेस होती हैं. नंबर 1, सिंगल बिजनेस क्या करता है, पहले सर्व करता है लोकल को या रीजनल मार्केट को. सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर शॉप खुली और कहीं पे नहीं खुली. देन अब आप जियोग्राफिक एक्सपेंशन करते हैं, उसी एरिया में एक और ब्रांचेस खोल लेते हैं. स्कूल्स का बड़ा क्लासिक एग्जांपल हो गई है. फिर यू स्टार्ट डूइंग द वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड नंबर स्टेज 4, ग्रोथ स्लोज, सो द बिजनेस डाइवर्सिफाइज. तो आपकी बिजनेस डाइवर्सिफाई हो रहा होता है. ठीक है. देन ग्रोथ मैट्रिक्स को अगर आप देखें, नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स ग्रोथ. दो किस्म की होते हैं, एक आपके प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स के मार्केट्स में जाते हैं. एक होती है आपकी प्रेजेंट मार्केट और एक होती है आपकी न्यू मार्केट. एक होता है आपका प्रेजेंट प्रोडक्ट और एक होता है आपका न्यू प्रोडक्ट. अगर तो अब आप 4 किस्म की स्ट्रैटेजीज इसमें लगा सकते हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन. नाउ इफ योर प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एंड योर मार्केट इज ऑल्सो प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट जो करंट सिचुएशन में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन की. लेट्स पेनिट्रेट, गो डीपर, ज़्यादा मार्केट शेयर हम लेते हैं. अगर आपकी मार्केट बिल्कुल न्यू है, मैं इस्लामाबाद से लाहौर चला जाता हूँ टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट वही है जो कि मैं यहाँ पे अपना सेल कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज मार्केट डेवलपमेंट. मैं अपनी मार्केट को डेवलप कर रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ. देन इफ माई मार्केट इज प्रेजेंट लेकिन मेरा प्रोडक्ट नया है, तो then what I'm doing, I'm doing product development. I'm introducing more. I was a Chinese restaurant in Islamabad. मैंने कहा जी अब मैं देसी भी ले आता हूँ, तो अब मेरा क्या ये product development है. Then comes your कि बिल्कुल मार्केट भी नई है और आपका जो है प्रोडक्ट वो भी बिल्कुल नया है. So this is known as your diversification. So ये हम 4 चीज़ें लगाते हैं in our growth matrix. Remember that very well, क्योंकि जब भी आप strategy में आ रहे होंगे, you will say, sir, let's introduce a new product and we will launch it in the same market. So अब आप क्या कर रहे हैं, जब हम नया product गा रहे हैं same market, आप कहोगे, instead of saying all that, as I said, business is mostly about jargons. So you would say, let's go for product development, let's go for market development, let's go for market penetration, let's go for diversification. So use these terms when you are actually in your business meetings, when you're going for the interview, so that it actually tells the next person that you know, okay, what you were talking about, what you meant by product development. अब ये हमने market penetration I have already covered, I'm going to skip that. Product development हमने कर लिया, उसके बाद market development हमने की, diversification की. Now let's start a new company. New company जो करती है, once you are starting it from the scratch, it will take an ample of time because no one knows you in the market. ठीक है. And if existing competitors are slow to respond, changes in the industry. या आपके जो existing competitor वो बहुत slow हैं in respond to the changes in the industry. Use कब तो आपने नई company start करनी है. Then use if it is more economical to start from scratch rather than acquiring an existing company. यानी sometimes अगर आप एक चला हुआ बिजनेस खरीदते हैं, maybe it is much more expensive, maybe it's not according to your need, maybe जो customer base है वो आप नहीं चाहते वैसे customers, तो it's better to start a new one. Use नई कंपनी आप उसमें स्टार्ट करें if the organization is already has almost of the needed skills. के organization के पास वो सारे skills हैं, that's why आप कहते हैं let's go for another new company. Use if additional capacity is not adversely impacted by the industry. ठीक है. And use when the new company does not have to go head to head with powerful competitors. Market के अंदर competitors आपके as such नहीं है. If अगर हैं भी they're very slow, then you start a new company. But अगर आपकी already company वो market के अंदर there are very strong competitors, then you have to come up with a very strong strategy. For example, जब walls आई market के अंदर, there was already Polka, there was already Hiko, there was Igloo, all these ice cream brands were there. तो लेकिन Unilever का product था, it was a big giant which was coming with this ice cream product, so they could easily market it. So therefore you need to see कि जी मेरे पास क्या skill set है और अगर मैं नई company start करता हूँ, whether it is going to penetrate or not. Then
we can go for joint ventures. Joint ventures क्या होते हैं? सबसे easy क्यों हम joint ventures में जाते हैं? Because it's too risky to go alone. ठीक है? अगर आप कहते हो जी मैं अकेला नहीं जाना चाहता, I don't want to go into this business alone, तो आप क्या कर लेते हो? joint venture कर लेते हो. You use it when pooling competencies of partners provide a stronger competitive advantage. ठीक है, आपने किसी और के साथ वो जॉइंट वेंचर किया और जो आपका कंपेटिटर वो आपके सामने क्या हो जाता है? वीक हो जाता है. दैट इज 1 + 1 = 11. एंड देन इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जी अब आपको पता नहीं होता कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा. हु हैज़ एन इफेक्टिव कंट्रोल, हु इज़ इन द ड्राइविंग सीट. ठीक है, पावर प्लेस में आ जाती है. पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आ सकती हैं? सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, कंट्रोल ओवर कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स, whether operations should conform to one partner or another. ये है potential conflicts जो कि आप कहते हैं. Now we start linking up our budget to strategy. Now implementation, वही वाली जो stage हमने की थी lecture 2 के अंदर, implementation of strategy requires number 1 enough resource to support the strategy. यार पैसों के आपका काम नहीं होगा. Then screening of requests of new capital projects, ठीक है, and bigger operating budgets. Shifting the resources to support new strategy priorities. आप कहीं पे आप डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, कहीं पे अपसाइजिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप कुछ एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर देते हैं which are not required. Now, when we are talking about budget, when we are talking about linking the strategy with budget, तो उसके अंदर आपका क्या करना होता है कि जी जो आपका budget constraint है, budget acts like a constraint, उसके अंदर आपने अपनी strategy को implement करना है. Now, remember, ठीक है, low cost is there, but you cannot compromise with the quality. अब आप क्या करते हो? आप अपनी organization के अंदर you have to apply best practices. And which are the best practices? Implementing a strategy involves best practices. और best practices means आप क्या करते हो? Standards बना लेते हो, benchmarking करते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स करते हो. फॉर एग्जांपल पीटीसी को अगर आप देखें, पाकिस्तान टबैको कंपनी वर्क्स सो मच हार्ड ऑन इम्प्रूविंग देयर प्रोसेसेस, बेस्ट प्रैक्टिस को अप्लाई करता है, मंत्रास बनाता है, क्वालिटी मंत्रास, अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करता है, डूइंग अ रिमार्केबल जॉब. यहाँ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या लेके आते हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. अब जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंस्टीट्यूट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दे आर लिंक टूवर्ड्स डिफेक्ट फ्री मैन्युफैक्चर. आपका वेस्टेज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और जो चीज़ आपकी बन रही है उसके अंदर ज़्यादा डिफेक्ट्स मत हो. Then superior product quality. You need to have a quality of the product that is superior, that the customer feels that okay, I'm paying less price but I'm getting a very good quality. That you have a superior customer service. If your product has any problem, if your product needs some information, people at the front desk who are actually handling the product, they actually know the product, and the customer comes with their query and they are happy go customers. They know okay, we are satisfied customers. और आपके customers की क्या होनी चाहिए? Total customer satisfaction होनी चाहिए. Formal reporting of strategy, इसमें क्या होता है? Our information is very critical. Accurate and timely information is essential to guide the action. If your information is old, believe me, your strategy is going to be a typical failure. Prompt feedback on implementation initiatives are needed before actions are fully completed. आपको feedback उसी वक्त देना है, because believe me, this is a wartime situation. This is a real life situation. You can't say कि अच्छा कल दे दूँगा, because the markets are brutal. Your customers are changing. Your customers' needs are actually changing. And if you are saying कि same strategy लगाते रहे, फिर नोकिया वाला हाल होगा हमारा. Then monitoring early implementation actions serve two purposes. अगर आपने शुरू में ही monitoring की है, so it actually serves two purposes. Number 1, quick detection of the need to adjust strategy. आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि मैंने कौन सी strategy कैसे change करनी है. You are not implementing it. क्योंकि correction costs are much higher as compared to अगर आपने पहले ही उसको fault को पकड़ लिया है. Then monitoring also helps you in determining कि जी wherever we are going, what kind of actions we are taking, they are actually helping us. Either we are deviating from our objectives or not. तो monitoring आपको ये साथ साथ real time आपकी वो feedback आपको दे रही होती है. And critical success variables must be tracked as needed. Formal reporting of the strategy.
कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कस्टमर का डाटा आपके पास होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का डाटा होना चाहिए, ऑपरेशंस का डाटा होना चाहिए, फाइनेंशियल डाटा होना चाहिए, और इस सारे डाटा के साथ यू शुड नो हाउ टू प्ले विद दैट डाटा. ठीक है. देन योर कमिटमेंट टू दैट चोजन स्ट्रैटेजी. Yes, we have developed the strategy after doing all those competitor analysis, competition analysis, all that stuff. But what I'm trying to do is that you have to show commitment. Whatever you have actually chalked out, you have to fulfill it in spirit. ये ना हो कि half-heartedly आप करोगे तो आपको कभी भी desired outcomes नहीं मिलेंगे. And ladies and gentlemen, that actually finishes our strategy part. Now, once we are looking into the strategy, we have to be very careful because it's not just based on the previous information. It is based on the present information. It is based on the future trends also. आपने उन trends को भी देखना है. Because आप अपनी organization में क्या कर रहे हैं, आप अपनी organization में uncertainty को क्या करते हैं, कम करते हैं. जितनी ज़्यादा uncertainty कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी strategy implementation better होगी. और uncertainty उसी टाइम पे आपकी कम होगी once you have good information, once you have the reliable information, once you know what your actually customer looks for, once you know कि आपके suppliers कौन हैं, once you have an idea कि जी what are your finances, what are the sources of your funding. Either your funding is sustainable या एक दफ़ा आएगी and then it's gone. Because you have to consider everything because you are formulating an action plan and that action plan is actually going to give you success or failure. You can use any mix of strategy. There are so many actions that you can take, but they have to be on pure commitment. And the commitment is not just from the CEO, the commitment is basically from your workforce also, because if your lower management is not committed or if they are not acting upon whatever strategic mapping you have done, you are lost. Because आपकी जो winning होती है, that is with your army, not with the general. The army is basically the foot soldiers जो आके आपके कर रहे थे. He has just chalked out the strategy. So strategy implementation and strategy evaluation is as much more important as compared to the strategy formulation. So we will stop here. And in the next class, I'm going to talk about the operations strategy. I'll share the title of the book also. It should be in your folders because I've already shared the ebook and the lecture notes. So one more thing, revise this lecture number 2, or if you are क्या कहते हैं, like to go through the slides. एक दफ़ा आपको slides से करना है. Operations and management you have already done. Strategy, I don't know whether you have done strategy as an independent course or not. So strategy को एक दफ़ा आप देख लें, and then we start moving on कि operation strategy. और now our focus will be throughout कि operations में आपकी strategy किस तरीके से move करती है. The point is that once you are actually developing, once you are actually looking कि जी हम product development में कौन सी strategy लगाएं या process development में कौन सी लगाएं, so then you start knowing कि जी हमने कौन सी strategy लगानी है, जिस तरह low cost लगानी है, focus लगानी है. Remember, these strategies are not just for the marketing people or for the sales people. This can be applied at the operations end also. जब हम कहते हैं जी continuous improvement आप करें, quality की लेके आए हैं strategy, because cost तो कम हो रही है. जो सबसे बड़ा caveat यही था that if you are decreasing the cost but you are compromising with the quality of the product, still आपकी market के अंदर exit है. आपने अपने competitors को understand करना है. You have to see कि किस किस्म के वो moves कर रहे हैं. If you do not understand your competitors, believe me, they are going to give you a big blow and आपको नहीं पता चलेगा क्या हुआ है आपकी company के साथ. So you have to have a very good analytical skills in order to see कि जी आपका competitor क्या कर रहा है इस वक्त market में, उसके क्या future plans हैं, how he is going to take over the market. So these are all things that you have to stay focused on. Till then, see you in lecture number 4, and I hope you have developed this habit of actually going through 2 to 3 magazines and knowing that what is happening at the moment when you are doing this course. Have a wonderful evening, morning, afternoon. Take care. Allah Hafiz.